Section 2.8, Bounded Linear Functional, from Erwin Kreysigs Functional Analysis book. My name is Tahir. We start with the definition of a functional. A functional is an operator whose range lies on the real line or in the complex plane C. Functional एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसकी रेंज रियल नंबर्स के अंदर होती है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर होती है. ये दो फील्ड्स हम यूज करते हैं फंक्शनल एनालिसिस के अंदर. तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शनल एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी रेंज किसी फील्ड के अंदर लाई करती है, और यहाँ पे हमारे लिए वो फील्ड या तो सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है या सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है. ए लीनियर फंक्शनल इज डिफाइंड एज, एक फंक्शनल को हम लीनियर कब कहेंगे? Let X be any norm space over the field R or C. A functional f from domain of f to k, where domain of f is some subspace of x. आपको पता है कि बाजुकात फंक्शन पूरी स्पेस पे डिफाइन होता है x पे, और बाजुकात उसकी सब स्पेस पे डिफाइन होता है. और ये फंक्शनल लीनियर कब कहलाएगा? If for every x y in x and every alpha x scalar it satisfies two conditions. आपको पता है लीनियर होने के लिए दो कंडीशन है. नंबर वन, f of x plus y equals to f of x plus f of y, and f of alpha x is equal to alpha times f of x, where alpha is scalar, x is vector, and x plus y is vector addition. So linear operator is basically an operator which satisfies which preserves the vector addition and scalar multiplication. So if a functional preserves vector addition and scalar multiplication, then we call it a linear function. Now what about bounded linear function? अब हम bounded linear functional define करते हैं. यानी आप देखिए bounded linear functional, एक तो बात ये कि वो functional होगा, दूसरी बात वो linear होगा, तीसरी बात वो bounded होगा. इसे हम इस तरह से define कर सकते हैं. A functional f from domain f to k, where domain f is a subset of norm space x, is said to be a bounded linear functional if, number one, f is linear, number two, there exists a positive real number c such that f of x mod is less equal to c time norm of x for every x belong to domain of f. अब आप देखें कि bounded linear functional क्या होता है? a functional, यानी बुनियादी तौर पे वो एक functional है, number one. Number two, f is linear, वो linear है. Number three, there is a positive number c such that f of x is always less equal to c time norm of x. ये boundedness की condition है. तो ये तीन condition है कि वो functional हो, वो linear हो और वो bounded हो. So if f is a bounded linear functional, then f is obviously linear. अगर f linear है तो फिर for x equal to 0, जब आप f को 0 पे अप्लाई करेंगे you will get 0, because for a linear function f of 0 is 0. So now suppose x is not 0, अगर x 0 नहीं है in this inequality 1, then we can divide by x norm and we get f of x over x norm is less equal to c. अब ये f of x over x norm, ये रेशो जो है ये एक नंबर नहीं है. ये रेशो आप हर x के लिए फाइंड कर सकते हैं. कोई x1 लें तो f of x1 over x1 norm, x2 लें f of x over x2 norm. So this is actually a set of values. So this set of values, this is basically a subset of real numbers. So this set of values is bounded above by C. C is an upper bound of this set. This shows that the set of non-negative real numbers defined by this ratio is bounded above by C. और हमें पता है कि अगर कोई subset of real number bounded above हो तो उसका supremum जरूर exist करता है. लिहाजा इसका supremum जरूर, set का supremum जरूर exist करेगा. This supremum is denoted by f norm. उसे हम f norm के साथ represent कर देते हैं. Thus we can write f norm is equal to the supremum of f of x over x norm. ये जो ratios हैं इनका supremum जो है वो f norm. We know that f norm is because supremum, so two things. Number one, this is unique. This is a unique number assigned to every bounded linear function. Number two, because it is supremum and c is an upper bound, a supremum is basically least upper bound. So this f norm is actually the smallest possible value for c, and
obviously f of x over x norm for a particular x is less equal to the supremum taken over all these ratios, and this supremum is equal to f norm. From here we obtain a very important inequality about boundary linear functional, that is f of x mod is less equal to f norm into x norm. Now obviously this f norm is actually the least possible value for C. And then now we discuss some examples. Number one example is norm. Norm एक function है x से r पे, where x is a norm space, but this is not linear. ये एक functional है लेकिन ये linear नहीं है. ये क्यों linear नहीं है? Because हमें पता है कि norm की एक property है कि x plus y norm is less equal to x norm plus y norm. x plus y, this is by definition. लेकिन इसमें अब आपको पता है यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये x plus y norm इक्वल भी हो सकता है x norm plus y norm से, और x plus y norm लेस स्ट्रिक्टली लेस भी हो सकता है x norm plus y norm से. अब अगर तो norm एक लीनियर फंक्शन होता तो फिर ये हमेशा इक्वल होना था. We know that the equality in this x plus y norm less equal to x norm plus y norm may not hold. For example, suppose x is equal to r. We take two numbers, -3 and 2. We calculate x plus y, -3 plus 2, this is -1. -1 norm is +1. Whereas अगर आप उनका अलग अलग norm find करें तो -3 norm is 3 plus 3, 2 norm is 2, 2 plus 3 5. अब आप देखें कि अगर आपने पहले उन्हें ऐड किया -3 plus 2 फिर norm लिया, norm of sum is 1, जबकि sum of norms is 5. So this is not equal. These are not equal. Hence, norm is not a linear operator. Next example is dot product. Let alpha be a fixed vector, alpha 1, alpha 2, alpha 3 in R3. This vector is fixed, any vector, but now it is fixed. Define a functional f from R3 to R. A function जो x3 पे apply होगा और हमें एक real number देगा, which is defined as f of x is equal to x dot a, where x is any for every x in R3. A is also a fixed vector in R3. So x dot a means dot product. We know that component-wise dot product is x1 alpha 1, x2 alpha 2, x3 alpha 3. We prove that this dot product is actually bounded linear functional, and norm of this bounded linear functional f is equal to the length of that fixed vector alpha. Now we prove this claim. We start from f of x is equal to x dot a, then f of x mod is equal to x dot a mod, and x dot a mod is less equal to x mod into a mod. हमें पता है कि a dot b होता है a b cos theta, और cos theta हमेशा less equal to 1 होता है, लिहाजा a dot b is less equal to length of a into length of b. इसे हम कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी कहते हैं. ये अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो x dot a is less equal to x norm into a norm. Suppose x is not equal to 0. We divide by x mod. F of x mod over x mod is less equal to a mod. Now if we take the supremum over all the domain R3, then this is less equal to a, and now the left hand side. अब आप देखें जो left hand side है, supremum of this ratio, ये f norm है. So f norm is less equal to a norm. Now we prove that f norm is also greater equal to a norm, so that f norm is equal to a norm. For this, let we take x equal to a, then f norm is equal to the supremum of f of x over x, supremum of these ratios, and supremum of these ratios is greater equal to the ratio for a fixed x, क्योंकि यहाँ पे a एक fixed vector है और left hand side पे ये इन सारे vectors का supremum है. So supremum is greater equal to f of a over a. And what is f of a? f of x was, f of x आपके पास था x dot a, तो f of a बन जाएगा a dot a, and a dot a is a mod square, एक a mod से cancel होकर आपके पास ये a mod बन जाएगा, तो ये बन जाएगा f norm is greater equal to a mod. Hence एक बार आपने प्रूव कर दिया f norm is less equal to a, दूसरी बार f norm is greater equal to a,
which mean f norm is equal to a. So dot product is a bounded linear functional, and length of this f norm is equal to that fixed vector a. Next example is definite integral. डेफिनेट इंटीग्रल के लिए आपको ये फंक्शनल डिफाइन करने के लिए आपको एक सूटेबल स्पेस चाहिए. यहाँ पे वो सूटेबल स्पेस है कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड ऑन इंटरवल a b, because we know that every the Riemann integral of every continuous function defined on a closed and bounded interval exists. लिहाजा आप अपनी जो डोमेन है वो आप रख लें continuous functions. F define f from x to r defined by f of x equal to Riemann integral of continuous function xt over a to b for all x in C A B. So this is a functional because its range is on the real line, and we prove that this is bounded linear functional, and length of this functional is equal to the length of the interval b minus a. It is very obvious. हमने अपने पिछले linear operator के lecture में इसे prove किया था कि जो Riemann integral होता है वो हमेशा linear होता है. Now we prove that this is bounded. From here, f of x equal to a to b xt dt. आप absolute value ले लें. F of x mod is equal to mod of a to b xt dt. And we know that absolute value of the integral is less equal to integral of the absolute value. And x of t is less equal to the maximum value of x of t. That is, x of t जो है ये x norm जो होता है length of x बुनियादी तौर पे function x की जो value होती है x of t, यानी सेट आप क्या करते हैं कि आपके पास एक फंक्शन x है, आप a b इंटरवल में से आप t लेते हैं, आप उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, उसके आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं. So the maximum of absolute values of the function x is called length of x, and this is value of x at any t. So value of x at any t is less equal to the maximum value. So we can replace this x of t mod by x norm. We arrived at this. This is less equal to a to b x norm t dt. अब आप इस x norm को इंटीग्रल से बाहर ले जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा x norm a to b dt. There is one integral of 1 is t and limits are b minus, so b minus a. This is equal to x norm into b minus a. ये x norm अगर आप suppose x is not equal to 0, ये आपका divide हो जाएगा. So f of x over x norm is less equal to b minus a. और अगर आप left hand side पे supremum ले लें तो ये f norm बन जाएगा. So f norm is less equal to b minus a. अब हम prove करेंगे कि f norm is greater or equal to b minus a. Again हम क्या करेंगे, हम इस definition में जो हमने ये define किया है indefinite integral, यहाँ पे एक special value x of t को देंगे जिससे greater equal prove हो जाएगा. To prove f norm greater equal to b minus a, we choose a special value of x which is equal to the identity function 1. Sorry, this is the constant function 1. जिस नंबर पे भी अप्लाई हो उसका आंसर 1 आ जाए. इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि first we write f norm. F norm is actually the supremum taken over all the ratios. Supremum of all the ratios taken over whole domain. This is greater or equal to the ratio for this particular x naught, f of x naught over x naught norm. X naught norm should be 1 because x naught की वैल्यू हमेशा 1 रहती है. ये कांस्टेंट फंक्शन है जो हमेशा 1 दे रहा है, लिहाजा इसकी जो लेंथ होगी वो 1 हो जाएगी. तो ये x naught norm डिसअपीयर हो जाएगा. f of x naught, अब f of x naught क्या है? Riemann integral a to b x naught of t dt, or x naught of t is 1, so integral of 1 is t and limits from a to b gives b minus a. So f norm is greater or equal to b minus a. पहले हमने प्रूव किया f norm is less equal to b minus a, और अब ये f norm is greater equal to b minus a. जब आप कंबाइन करेंगे you will get f norm is equal to b minus a. So Riemann integral defined in this way is bounded linear functional and its length is equal to b minus a. Then next example is by taking the space of all, again by taking space of all continuous function. Another practically important functional on CAB is obtained if we choose a fixed x naught in the domain. अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास space of all continuous function है, इसके अंदर सारे continuous function पड़े हैं जो close interval a b पर continuous हैं.
आप एक फंक्शनल डिफाइन करने के लिए आपको रियल नंबर चाहिए, आपको डोमेन आर पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप एक टी नॉट फिक्स कर लेंगे, एक पॉइंट फिक्स कर लेंगे ए बी में से, उस पे आप अपना एक्स अप्लाई करेंगे, तो एक्स ऑफ टी नॉट विल बी ए रियल नंबर. दिस वे यू कैन डिफाइन. लिहाजा हम अब टी नॉट फिक्स करके यहाँ से एक फंक्शन डिफाइन करेंगे. ये फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स, यहाँ पे सी ए बी है, तो एफ फ्रॉम सी ए बी टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स. एक्स इज अ फंक्शन, एफ जिस फंक्शन पे अप्लाई करेगा वैल्यू विल बी एक्स ऑफ टी नॉट. उस टी नॉट इज फिक्स्ड, यानी जो भी फंक्शन, मिसाल के तौर पे अगर आपका फंक्शन एक्स पे है वो साइन ऑफ टी है, तो एफ ऑफ साइन टी, अब वो साइन टी नॉट आप फर्ज कर लेते हैं कि पाई है, तो वो साइन पाई पे अप्लाई हो जाएगा. साइन ऑफ पाई इज 0, वो 0 एक रियल नंबर है. तो इस तरह ये फंक्शन हमें हमेशा एक रियल नंबर देगा, बिकॉज एक्स जब टी पे अप्लाई होगा तो दैट विल बी रियल. वी कैन प्रूव दैट दिस इज द बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एंड लेंथ ऑफ दिस एफ इज इक्वल टू 1. दिस इज द प्रूफ. F of x equal to x t naught. From here, f of x mod is equal to x t naught mod, and x t naught mod is less equal to this. This is actually value of x at a fixed x naught, at a fixed t naught. ये x की वैल्यू एक पॉइंट पे है, और सो ये वैल्यू जो है ये s इक्वल होगी मैक्सिमम वैल्यू से, and maximum value is equal to the length of x, and this maximum value is equal to length of x. So f of x mod is less equal to x norm. Dividing by x norm, if x is not 0, then dividing by x norm, this is f of x over x norm less equal to right hand side पे x norm by x norm, this is 1. और अगर आप supremum ले लें तो left hand side will be f norm. So f norm is less equal to 1. Now we prove that f norm is greater equal to 1, so that f norm becomes equal to 1. For this हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से एक डोमेन का एक वेक्टर फिक्स करना पड़ेगा. Suppose x naught is again constant function 1. फिर constant function 1 का मतलब है इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, तो फिर जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी वो भी 1 आएगी. So x naught norm is 1, and we obtain f norm. F norm is supremum, and this supremum is always greater equal to this ratio for fixed x naught. And what is this fixed x naught? F of x naught is actually the value of x naught at t. और अगर x naught constant function 1 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी. F of x naught is equal to the value of x naught, and value of x naught is 1. Similarly, x naught length is the maximum value of x naught, and x naught is constant, its value is 1, so this is also 1. 1 by 1 is 1, so f norm is greater equal to 1. Before that we prove x norm is less equal to 1. Combining these two we get f norm is equal to 1. So this is example. Next example is L2 space, Hilbert space. This is the space of all sequences with square absolute value series is convergent, and we can obtain a linear functional f on the Hilbert space L2 by choosing a vector. इसे आप कंपेयर करें जरा अपने R3 आपने लिया था, R4 Rn यूक्लिडियन स्पेस, वहां पे आप एक डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं. अब ये क्योंकि इनफिनिट टपल होते हैं L2 के अंदर, इसके हर एलिमेंट के अंदर इनफिनिट रियल नंबर होते हैं, तो अब आप देखें कि आप उसी किस्म की कोई चीज यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं. डॉट प्रोडक्ट का कोई नेमल बदल आप यहाँ पे यूज करेंगे. जैसे वहां पे आपने एक वेक्टर फिक्स किया था, यहाँ एक वेक्टर फिक्स कर लेंगे, उसके साथ प्रोडक्ट डिफाइन कर लेंगे. लेट x be any element in L2. f of x is equal to summation xij alpha j, where xij's are components of x, alpha j's are components of a. तो आप इसे कह सकते हैं ये किसी किस्म का a डॉट x है. तो इसी सेम मेथड से आप प्रूव भी कर सकते हैं जैसे वहां पे प्रूव किया था. आप में f of x, अब इसे आप कॉशी-श्वार्ज़ इक्वालिटी यूज कर लें. f of x mod is equal to the norm of this series, and this series, this particular series, we know that for L2 this series is convergent and it converges uniformly. It is absolutely convergent. So Cauchy-Schwarz inequality use करें. f of x mod is mod of summation. Mod of summation is less equal to summation of mod, and this is again less equal to, जैसे मैंने वहां पे आपको बताया था एक आसान तरीका याद रखने Cauchy-Schwarz inequality का कि a dot b mod is less equal to length of a into length of b. यहाँ पे इसे आप a dot b लें, ये a के कंपोनेंट है, ये b के कंपोनेंट है. So this is less equal to the length of x, ये x के कंपोनेंट है तो ये length of x है,
into the length of alpha, ये alpha के components हैं, so this is equal to length of x into length of alpha. So f of x is less equal to x norm into alpha norm. x अगर 0 नहीं है तो आपके पास divide हो जाएगा, and again you will get from supremum f of x over x norm is less equal to a norm. और रिवर्स इनइक्वालिटी के लिए आप उसी तरह से यहाँ पे x को अगर a पुट करते हैं तो दिस विल बी a डॉट a स्क्वायर, एंड यूजिंग द सेम प्रोसीजर जो आपने डॉट प्रोडक्ट में यूज किया है वही यहाँ पे अप्लाई करके आप प्रूव कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ f इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर अल्फा. सो अच्छा, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की. यहाँ हमारे लिए खास बात ये है कि जो फील्ड होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो या चाहे सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, ये हमेशा एक नॉर्म स्पेस बनाता है. लिहाजा हम जो फंक्शनल ले रहे हैं f फ्रॉम x टू r या f फ्रॉम x टू c, उसे हम कह सकते हैं वो बुनियादी तौर पे एक फंक्शन है जो कि एक नॉर्म स्पेस ये दूसरी नॉर्म स्पेस पे जा रहा है, क्योंकि हर फील्ड बजाते खुद एक नॉर्म स्पेस होता है. तो इसका मतलब ये है कि आपका हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एक किस्म का बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ही है. क्योंकि अगर आप याद करें कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो एक नॉर्म स्पेस से दूसरी नॉर्म स्पेस पे डिफाइन होता है. अब r या c जो है बाउंडेड लीनियर फंक्शनल में भी वो f जो है वो नॉर्म स्पेस पे ही डिफाइन हो रहा है, और उसकी रेंज जो है वो एक फील्ड के अंदर लाई करती है. अब वो जो फील्ड है वो बजाते खुद यहाँ पे एक नॉर्म स्पेस भी है. इन दिस सेंस आप ये कह सकते हैं कि बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स बेसिकली बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के स्पेशल केसेस हैं जिनमें रेंज आपके पास जो होती है वो फील्ड के बराबर होती है. इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज आपके पास थी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की, वही वो प्रॉपर्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स की भी है. मिसाल के तौर पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ. नंबर 1, फाइनाइट डायमेंशन. हमने ये पढ़ा था कि अगर x एक फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस हो तो हर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जो होता है, फिर हर लीनियर ऑपरेटर जो होता है वो बाउंडेड होता है. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक नॉर्म स्पेस x फाइनाइट डायमेंशनल हो तो फिर हर लीनियर फंक्शनल भी बाउंडेड होगा, बिकॉज लीनियर फंक्शनल इज आल्सो लीनियर ऑपरेटर. जो रिजल्ट लीनियर ऑपरेटर के लिए होल्ड कर रहा है वो लीनियर फंक्शनल के लिए भी यहाँ होल्ड कर रहा है. इसी तरह आपने एक रिलेशन देखा था कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस में. आपने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा होगा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के बारे में. वहां मैंने प्रूव किया था कि जो लीनियर ऑपरेटर हैं इनके अंदर बड़ी स्पेशल खूबी है कि अगर ये बाउंडेड हो तो कंटिन्यूस लाजमी होते हैं, अगर कंटिन्यूस हो तो बाउंडेड लाजमी होते हैं. तो बाउंडेडनेस एंड कंटिन्यूटी आर इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज. लेकिन लीनियर ऑपरेटर्स के लिए अगर ऑपरेटर लीनियर ना हो तो फिर ये इक्विवेलेंट नहीं है दो चीजें. अब क्योंकि हर लीनियर फंक्शनल भी एक लीनियर ऑपरेटर है, लिहाजा उसके अंदर भी यही खूबी होगी कि एफ भी ए लीनियर ऑपरेटर. सॉरी, यहाँ पे आपको हमें लिखना चाहिए लीनियर फंक्शनल. domain is subspace of x, x, y both are norm spaces. This is actually a property for linear operator. अब linear functional के लिए हम लिखेंगे f from domain of f to r or c, where domain is subset of x, x, y, x and r are also norm spaces. Then f is continuous if and only if f is bounded. And boundedness and continuity are equivalent properties. ये bounded linear operator के लिए भी है और bounded linear functional के लिए. इसी तरह if f is continuous at a single point, it is continuous on the whole set. Again, for a bounded functional, these two properties hold. मेरे लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि ये दो प्रॉपर्टीज बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं कि कैलकुलस में हमने ये देखा था कि continuous function may not be bounded and a bounded function may not be continuous. Similarly, function may be continuous at single point but may not be continuous on the whole set. But these are special properties of linear operators or linear functions. So this is end of our today's lecture. Next lecture में हम isomorphism define करेंगे, algebraic reflexivity देखेंगे और dual spaces के बारे में हम पढ़ेंगे. Thank you very much.